Hello and good evening guys, this is Rohit Kumar and today I welcome you all to another video at Clocks Design Concept and today I'm going to tell you something about product design. Most of people think that product design stands only for making the sketches and making prototype and perspectives, but it is not totally right. In a certain manner it is right, but not completely, because the product design always stands for solving the problem that we are facing in our day-to-day life activities. Like if we have to drink water, then we need a bottle, and if you go and see in market, then the variety of bottles, the not a variety, the design of the variety of bottle is completely different from each other, and the range of the design is completely fast. So first of all, you have to understand the simple logic that design is not just about making sketches, but it also about how it is going to solve the problem in society, how it is going to fulfill the need of people, and how it is going to fulfill your desire, and how it's going to make your life beautiful. Because when a product designing a product is all about how it's going to, how the people are going to buy and how you're going to sell it. So if your design is really nice, then you have to work really very hard, and you have to work on a lot of things. Most of it. And the last time when I was in my college, one of my friend came to me and said that I want to design a product. I asked him that what's the concept, and he showed me some sketches, and I said that this whole thing is a complete bullshit. You have to do a lot of things. You have to go through market research, you have to understand the graphics, you have to understand the paint color stands for the color outer color, because in a certain manner color attracts people, and different people have different mentalities, so different people also have different choices of color, and you have to understand that what is the most attractive color available in the market. And we all know that we are living in a generation in which everything is available on internet, so I don't think that you have to go through a college. For me, I'm giving us a fact that I've never gone through any college, but I'm well capable to design anything I want, and this is what I'm still doing. So today I'm going to show you a sketch of a simple bottle. How can you make the sketch of a bottle so you can make it beautiful, and how can you make it more beautiful? Design can be of anything. You can design anything you want. Because the product have no face. It can be sometimes it becomes a series of a vast range of designs, and sometimes it stops at after two or three sketches. So you have to decide what you're going to do and how you're going to make it. So let's go and see how I used to make the designs and how I used to make sketches. And after this, when the sketch will get complete, I will show you how I used to color them. Before starting the sketch, let me tell you something what I'm going to use. I want to show you something. This is the A3 size Xerox paper. You can get it from any departmental store. It is easily available in every store. You can also get it from photocopy centers where you go for Xerox copies. And the second thing is this mechanical pencil. It is also known as a drafting pencil. It is still my favorite, and also shown it you earlier in my previous video. So let's see. And along with it, I'm also going to use one more thing. This thing. This one is really very cheap. This thing is really very cheap, and it is easily available in every departmental store and bookstore. This one is 5 rupees ball pen. The size of its tip is 0.5, and it is in blue color. You can also go with black one, and black one is more attractive, but I don't have any black pen, so I'm using this one. So let's see. So the first sketch is ready. I have made this with a graphic pencil, and using pencil before using pen is really very important, because if you're using pen, then if you made a mistake, then at that moment it becomes really very hard to erase that one. So using pencil is really very beneficial, and using pencil is also easy because you can erase it at any moment you want. You don't have to make any mistake, but if you're making mistake, then it is much better to use a pencil. And starting with a pencil is much better, and it also makes you sketch greater. If you see, then this is the cap, this is the curve which goes from up to down, and it is vertically inclined, and it is also a little bit tapered, and just to make it beautiful. And this is the grip to hold the bottle.
this is the actual size of the bottle, not actual, but this is the first concept of the bottle, and I've made this by using my pencil, and all the curves are ready, and I just have to shade it. And this is the second sketch. इसको पेन से मैंने कलर कर दिया है, आई मीन पेन से स्केचिंग से कंप्लीट कर दिया, एंड देन जस्ट लुक एट इट हाउ इट्स लुकिंग. इसके सारे चीज़ परफेक्ट है. परफेक्ट तो कहेंगे नहीं बिकॉज इट्स प्राइमरी स्केच, मैंने पहले ही बोल दिया था, बट इट स्टिल लुक्स गुड, एंड एवरीथिंग इज ऑन इट्स प्रॉपर पोजिशन. एंड देखो, पहली चीज़ यही समझनी होगी कि व्हेन यू आर मेकिंग ए स्केच और मेकिंग कंसेप्ट, देन मेकिंग मिस्टेक्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट टेल्स यू वेर यू नीड टू मेक इम्प्रूवमेंट्स. क्या होता है ना कि अगर आप कंटिन्यूसली उस चीज़ को बनाए जा रहे हैं और एक ही चीज़ पे अटक गए, तो आपको पता नहीं चल पाता है कि वेर यू मेकिंग मिस्टेक्स एंड वेर यू आर नॉट. सो मेकिंग मिस्टेक्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्टार्ट मेकिंग मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, एंड ऑल्सो लर्न फ्रॉम डिफरेंट स्केचेस हैं. मार्केट में और भी बहुत से डिज़ाइनर्स है, बहुत ही से स्केच आर्टिस्ट है जो बहुत ही अच्छे स्केचेस और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट बनाते हैं. उनसे सीखने का फ़ायदा ये होता है, उनके फ़ोटोज़ देखने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप उस चीज़ को देख रहे हो तो आपको शेड समझ में आते हैं, कलर कॉन्ट्रास्ट समझ में आ जाता है, उसका कलर कॉम्बिनेशन समझ में आ जाती है. एंड देयर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ थिंग्स विच इट रियली नीड टू अंडरस्टैंड एंड नीड टू लर्न, एंड यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न इफ़ यू गो थ्रू दैट स्केचेस. इफ़ यू see at this point, then this thing is curved from this area to this area, and this is also curved from like this, and this one is curved like this. यहाँ पे भी कर्व किया हुआ है, बट ये वाला हिस्सा पूरा फ्लैट है. ये ठीक से तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये एक होता है कि वो बहुत से कंपनीज जो वाटर बोतल्स प्रोवाइड करते हैं, उसे होल्ड करने के लिए उसके कैप में एक नॉब दिया हुआ रहता है, एक हिंट सा दिया हुआ रहता है. आई डोंट नो व्हाट इट कॉल्ड, आप कमेंट में बता देना, मुझे ठीक से पता नहीं है. बट या इस तरह का बोतल एक्चुअली मार्केट में इसलिए उतारा जाता है क्योंकि बहुत से लोग जिम जाते हैं या फिर जो वर्कआउट के लिए जाते हैं, उनके लिए ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाया जाता है. ये आपको मोस्टली प्लास्टिक और फाइबर्स में ही मिलेंगे, आपको मेटल में मिलना बहुत ही हार्ड होता है. बट अगर आप कंसेप्ट बना रहे हो तो आपको ये समझना होगा कि आप कौन सा कंसेप्ट किस चीज़ के लिए बना रहे हैं और किस टाइप ऑफ कस्टमर के लिए बना रहे हैं, क्योंकि हर कस्टमर की अपनी एक नीड होती है जिसके अकॉर्डिंग ही वो उस प्रोडक्ट को परचेज करता है. तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हो तो आप किस कस्टमर बैकग्राउंड को टारगेट कर रहे हैं या फिर किस फील्ड को टारगेट कर रहे हैं. ये जब आप मार्केट रिसर्च करोगे, जब आप मार्केट में जाओगे, आप शॉप्स में जाओगे, देखोगे, आप लोगों से बात करोगे, उनके नीड्स को जानोगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. एंड ट्रस्ट में ये सारी चीज़ें आपको बुक्स में ऑलरेडी मिल जाएंगे, बट इफ़ यू डोंट वांट टू गो थ्रू बुक्स, देन गो एंड टॉक विद द पीपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स. वो आपको सी एग्जैक्ट बता देंगे कि उनके नीड्स क्या, और उसके बाद आपको उस चीज़ को बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है. ये पहला स्केच है, ये फ्रंट का है, फ्रंट साइड किस तरह से दिखता है. देन इसके बाद मैं आपको टॉप दिखा दूंगा और उसके बाद साइड दिखाऊंगा, बट वो नेक्स्ट वीडियो में. फिलहाल तो यही कहूँगा कि आप इतना कर लो, ये बहुत है. प्राइमरी स्केचिंग में इतना काफ़ी होता है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में उतना आपको दिमाग भिड़ाना नहीं होता. आप धीरे धीरे ही करो, बट करना स्टार्ट करो. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू वांट टू बी परफेक्ट, देन यू हैव टू स्केच एवरी डे. डजंट मैटर व्हाट यू आर स्केचिंग, बट यू नीड टू स्केच एवरी डे, एंड यू हैव टू स्केच एवरी डे. सो स्टार्ट स्केचिंग एवरी डे. आपको कुछ भी बनाओ, स्केच किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कार का हो सकता है, किसी भी चीज़ का. प्रोडक्ट का कोई जेंडर नहीं होता, या फिर प्रोडक्ट का कोई टाइप नहीं होता. प्रोडक्ट के रेंजेस इतने सारे हैं कि आप किसी भी चीज़ से स्टार्ट करके किसी भी चीज़ पेंट कर सकते हो. सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन व्हाट यू मेकिंग, बट यू नीड टू स्केच एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द शेड, द कर्व्स एंड द ग्राफिक्स. मैं इसमें एक चीज़ और इंक्लूड करता हूँ जो आपको देखने में आई होप कि पसंद आए. ओके, सो नाउ दिस इज द फाइनल स्केच. इसे प्रोटीन शेकर कहते हैं. आई डोंट नो व्हाट इट कॉल्ड एग्जैक्टली, बट मेरे हिसाब से जब लास्ट टाइम मैंने परचेज किया था, जो मेरा बोतल था वो प्रोटीन शेकर ही था. अब उसका नेट पे अमेजोन में प्रोटीन शेकर ही लिखा हुआ था, सो इसे प्रोटीन शेकर ही कहते हैं. और इस तरह के बोतल्स मोस्टली प्रोटीन पाउडर्स जो आते हैं उसे मिल्क के साथ शेक करने के लिए, प्रोटीन शेक बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. और इस तरह के बोतल में जब भी आप स्केच करो, इस तरह प्रोडक्ट से स्केच कर रहे हो, तो उसमें एक चीज़ आप बहुत ही कॉमन होता है, जो बहुत ही आपको कॉमनली मिल जाएगा. दैट इज इट्स मेजरिंग स्केल. ये इसका मेजरिंग स्केल है, जिसके थ्रू विच यू कैन मेजर हाउ मच क्वान्टिटी यू नीड टू मिक्स इन योर वाटर, हाउ मच क्वान्टिटी ऑफ
और हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोटीन पाउडर यू नीड टू मिक्स इन योर बोतल। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी आप किसी तरह किसी प्रोडक्ट को बनाओ तो आप ये ध्यान में रखना कि आप उस चीज़ के बारे में, आपको उस चीज़ के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज हो और आपको पहले से पता हो कि आपका प्रोडक्ट दिखने कैसा वाला है। सो दिस इज़ द फाइनल स्केच। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो एंड गाइज नाउ इट्स टाइम फॉर द फॉर्मेलिटी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड बी कंसिस्टेंट।